I अरे appreciate कागज this artistic angle, and this is perhaps true across all the people here. Okay, bhai, we're not searching for views. We're not going to do shit ke, like cheap tarike se log aa jaएं. But yeah because again, going back to sort of the educational angle where we're trying to fill this void within society or Pakistani media or whatever that we see that has led us to do this stupid thing that we do, there is an element of जितने लोग देखेंगे उतनी समझ भी पड़ेगी, yeah because if we're saying great stuff but in a way that nobody cares, yeah you know how does that relationship go? Has yeah it's anybody? a करना पड़ता है यार like sorry last thing Usman Wazir Amir Khan biggest scandal of the last like I like to bob my head when I say Yeah, yeah, scandal like this yeah. biggest लाइटें भी scandal बदल in the रही हैं last पीछे. फिर डिस्को हो रहा है. full अच्छा Yeah, yeah. last 2020 का जो biggest वो boxing scandal था was they came together put on the biggest show in Pakistan's history then splitted the scene put on two different shows two different cities could something happened there so to a certain degree if my and this is what I truly believe if my work is potent enough focused enough and just like trying to uncover the truth then I think automatically that kind of stuff will come अब भी नहीं आएगा बाद में आ जाएगा बाद में नहीं आएगा शायद कभी भी ना आए but the potency of the work can't change. So if I have to cover Usman Wazir or Amir Khan ka split as a story, I will do it honestly. I will not try to embellish it. I will not try to, whatever. And I think that story in itself should be good enough. But Right. बहुत मुश्किल है यार करना पड़ता है. Like at some So point you have to ask those questions. Yeah. you're not going to perhaps make controversy more potent, but if it's a natural discussion point, so you're not going to ignore it even कि भाई Yeah, मैं because तो I बस hate नहीं. that. MMA in Pakistan में यही है यार चार लोग हैं आपस में दो लोग एक दूसरे से नाराज हैं बात भी नहीं करते कुछ उसके बारे में बात I करें think that तो is वो भी गुस्सा हो जाते हैं. that's It's not like just MMA. I think that's the Pakistan story. कि हमारे yeah, तो basically. Yeah. Basically. थोड़े से लोग हैं सबको Except the नफरत है. podcasters, we all here, boys. नहीं. नहीं. बिल्कुल भी नहीं. ऐसा बिल्कुल भी होंगे नहीं. होंगे comments. But what about you guys? Uzair, Qazi, how do you feel about this relationship of not like searching or pandering to viewers, but also the necessity of having an audience for your message and work to be disseminated? काजी उजैर भाई तुम्हारा आप जो जो हाथ की पोजीशन है ना तुम लग रहे हो बोलने के लिए. यार आई मीन लोग उससे इतना फर्क नहीं पड़ता. आई मीन ऑडियंस जो है अब देखो मईशत के बारे में सीरियस कॉन्वर्सेशन वैसे ही सुला देती है लोगों को तो वैसे ही आपकी टारगेट ऑडियंस कम है. Right. उसके अंदर फिर आपने यू हैव टू सर्च फॉर के किस तरह का कंटेंट किसके पास जाएगा क्या उसका रिएक्शन होगा वगैरह वगैरह. बट आई डोंट थिंक दैट एटलीस्ट मैं इस बारे में नहीं सोचता बिकॉज अगर लॉन्ग टेल के बारे में सोचना है एंड यू वांट टू सॉर्ट ऑफ हैव सीरियस कॉन्वर्सेशंस तो शुरू में तो आपके अर्ली अडॉप्टर्स ही होंगे. उन अर्ली अडॉप्टर्स से होप है कि शायद कुछ ज्यादा लोग मैच्योर होके और अडॉप्ट करने लग जाएं ओवर टाइम. बट हमारा जो एक लूप बना हुआ है ओवरऑल सोशल मीडिया के अंदर या कंटेंट क्रिएशन के अंदर पर्टिकुलरली विद पॉलिटिकल इकोनॉमी एज माय सब्जेक्ट वो ये है कि एपेटाइट ही नहीं है लोगों की एंड इट सेल्स राइट कि किस इवन चीज की एपेटाइट नहीं है? टू हैव सीरियस कॉन्वर्सेशंस Okay. मेन स्ट्रीम में नहीं है. वेदर यू टॉकिंग अबाउट इवन पीपल जिनको समझ है इन चीजों की वो भी दे हैव टू एंड अप पैंडरिंग टू देयर बेस एंड टू देयर कोर ऑडियंस जो एक चीज एक्सपेक्ट करती है वो आपने उनको हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद देनी है. बट आई थिंक that to me is the depressing part. It's not about whether my content is gaining traction or not. It's that कि यार अगर आपके पास दुनिया जो है वो आपके फोन के ऊपर है और आप रिसर्च कर सकते हैं. You can actually spend the time to understand, chew your food and understand what the hell is going on. And you're still not choosing to do that, particularly as an educated young person. Then that's the most disappointing part. Because I think at the end of the day, जहाँ पाकिस्तान है इस वक्त, it is a very, very dangerous point. I'm not talking about बाहर से या साजिशें हो रही हैं वगैरह नहीं. I'm talking about the fact that आपकी एक young जनरेशन है जो अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं कर सक रही टू गेट वेयर दे वांट टू बी. एंड 10 साल हो चुके हैं और 10 साल आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं यही जनरेशन जब 40 साल की हो जाएगी मेरी जनरेशन और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी तरह मीट नहीं होंगी. एंड दैट्स अ वेरी बैड प्लेस फॉर सोसाइटी टू बी इन. And we're not having that serious conversation. And I think we should.
but No, I but don't then know how to get around it. doesn't that even highlight the point even more, where you are considering what you're addressing to be a point of such social importance? कि तुम्हारा तो, like, the cause will be benefited by more and more people approaching and Yeah, understanding it, right? yeah, but I don't know how to crack that code, right? In the sense Right. के अगर मिर्च मसाला डालने लग जाऊं तो वही बात, it will revert How to are the you mean. different? Yeah. How am I different? So I don't know how to get around that, but I think that's the part that concerns me most. Not कि यार इस 500 इतनी अच्छी conversation हुई डॉक्टर इल्हान नियाज के साथ, उन्होंने पूरा समझाया colonial era से लेकर आज तक पाकिस्तान की मईशत एक ही तरह से चली आ रही है, उस पे 500 views आए. That's the depressing part, because it is he's an academic, he's done great research, and people have a point of view on social media, like, they won't be bothered to listen to him for 45 minutes to understand what he's trying to say. Yeah. I'll come Also to काफी Qazi fit है and वैसे then यार, मतलब I'll come to Qazi just and then I'll come to what our solutions in more mature markets. But Qazi, what is your, do you concern yourself with the importance of what you think these people on your show are, how important it is to get their voice out to as many people? अरे भाई मेरा तो ये सीन था, even with the monetary thing ना, my thing was, and I was having this conversation with a close friend of mine today only, कि भाई देखो जो पैसे है ना, there are consequences. You work hard and you do something well, and whatever comes, right? And then they highlighted something very interesting. They were like कि यार हाँ वो तो ठीक है, then how do you explain all the mediocre people getting paid as well, right? So then like you said, and your मतलब the thing is, हाँ ठीक है, हम में से किसी को भी ये नहीं सुनना है, ठीक है, हम में से किसी को भी ये नहीं सुनना है कि यार देखो, make it feasible, make it a little, like, productivize yourself a little bit. You know, like, how is this? Because when I started ages ago, people were like, यार 20 मिनट कर लो ना, 20 मिनट 25 मिनट में कर लो, and I'm like, कैसे 20 मिनट में सलाम दुआ होती है सिर्फ. नहीं अली भाई देखो ना, but we did ना, we made our short clips and we made our nice Instagram grids. देखो, I'll come to that after this, but yeah. तो वही ना, अब देखो मैं यहाँ पे बैठ के बड़े चौड़े में, क्योंकि हम सब दोस्त हैं, मैं ये बोल सकता हूँ यार देखो मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनना है ना तो ना सुनो, right? But here's the problem, right? Here's the problem. Yeah. And this is a serious problem, कि आपका जो वो है, you need them to listen. Yeah. Right? It doesn't work any other way. Yeah. And you need this to be feasible. It doesn't work any other way in that vein as well. Yeah. You need this to be feasible. And to that end, matlab, I suppose, yes, keep doing it the way you're doing it, but also don't operate in absolutes, and maybe leave a little bit of room. Matlab, jaise na, never say never. Never be like मैं कभी भी इश्तिहार नहीं लूंगा, या मैं कभी भी I won't have a certain person on ever. Stuff like that, you know, like just be a little open. So then